What is up, guys? चलिए आज it's a new day, so it's a new week, right? A great beginning, a great beginning. चलिए फटाफट सारे बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट से ज्वाइन हो जाए। आज हम सर आज क्या करेंगे? सर थोड़ी आगे की चीजें देखेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हाल रहा है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, राइट? चलिए फटाफट से गाइज जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाए सारे बच्चे। राइट जल्दी फटाफट ज्वाइन हो जाइए ताकि हम क्या कर सके गाइज, आज का लेक्चर शुरू कर सके हम। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग बेटा। कल का टेस्ट कल का टेस्ट कैसा रहा? आप लोगों ने अटेंड किया था? कल का क्विज हुआ था हमारा किस पे? सब पूरा पूरा मैक्रो पे हमारा क्या हुआ था? क्विज हुआ था हमारा किस पे? राइट, हमारा पूरा मैक्रो पे क्विज हुआ था। इस पे मैक्रो पे कैसा रहा? आप लोग ने अटेंड किया? क्या आप लोग ने अटेंड किया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। Very good morning. My name is Saurabh Jaiswal. I'm your educator for economics. Let's crack your 12 CBSE guys. Now, a very brief introduction, about me. I'm a faculty of economics and accounts. I've been teaching at 11th, 12th, and as well as in CA Foundation. And it's been 2 years. It's been 2 years that we have been into teaching, right? Now, one thing, one thing that we really believe, that is logics, that is concepts. सर हर चीज को समझने का कोशिश करते हैं, हर चीज में एक मीनिंग ढूंढने का कोशिश करते हैं, रटने से ज्यादा, राइट? क्यों हो रहा है? लॉजिक क्या है? राइट, हम लॉजिक्स के पीछे भाग रहे हैं। हम रट्टा तोता नहीं बनना चाहते हैं, क्या रट्टू तोता नहीं बनना चाहते हैं, है कि नहीं? वाई? बस सर रट्टा हर कोई मान लेगा, रट्टा हर कोई बता देगा कैसा करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें लॉजिक्स चाहिए। हमें क्या चाहिए गाइस? हमें चाहिए लॉजिक्स, राइट? कंसेप्ट समझने पावर चाहिए, सिर्फ समझने की पावर चाहिए, है कि नहीं? तो हमारी क्लास में आपको हर चीज लॉजिकल मिलेगी। जहां भी ऐसा रहता है कि सर ये तो रटना ही पड़ेगा, सो उसकी भी टेक्निक्स बताएंगे, उसकी भी टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे। नाउ फॉर एग्जांपल, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज अ फेयरली थियोरेटिकल सेक्शन, राइट? तो ऐसे हम एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं, राइट? फिर एक स्टोरी बनाने, एक शॉर्ट से पहले पूरा पढ़ेंगे, ठीक? उसके बाद एक शॉर्ट स्टोरी तो खुद ही क्रिएट करेंगे कि क्या हुआ था, क्या था, कैसा था, राइट? इससे क्या होगा? यू विल गेट अ व्यू कि ओके, दिस दिस वाज द व्यू ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट? चलिए शुरू करते हैं। नाउ नाउ व्हाट इज एन अकेडमी? इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू आर न्यू, बच्चा अगर आप यस, आप जो देख रहे हो, अगर आप नए हो, if you are new to an academy and you are wondering what is it, guys, an academy is an online learning platform. It is what? It is an online learning platform. Here you will get to learn from n number of educators right here under one roof.
right here, all under one roof. आपने क्या करना है? सीधा साधा आपने सब्सक्रिप्शन लेना है. All you have to do is get a subscription. देखिए सारे वीडियोस जो है, मैक्सिमम वीडियोस हमारे YouTube पे भी अवेलेबल है. But if you get a subscription, you get more functionality, you get more exclusive content. You get what? You get more exclusive content, right? And इससे बस आप क्या है? इससे बस आप आपकी ट्यूशन फी कहे. सिंपल चीज, right? ना दो टाइप के हैं, प्लस इकोनिक. दो टाइप के हैं, प्लस एंड आइकॉनिक, राइट? दोनों के बेनिफिट्स देख लेंगे एंड वी विल सी हाउ टू प्रोसीड विद दिस. चलिए कल कल के क्विज में, ठीक है, कल जो हमारा मैक्रो का क्विज हुआ था, कल के क्विज में आपने एक चीज एक्सपीरियंस करी होगी, दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ क्लास, दैट इज व्हाट? लाइव पोल्स, राइट? सो सर, दैट्स व्हाई आई कीप ऑन एनकरेजिंग कि आप लोग आइए एंड क्या अटेंड करिए, स्पेशल क्लासेस, right? Because that gives you what? That gives you a taste of plus. So plus में क्या क्या benefits है? Plus में क्या क्या benefits है? You get live classes, you get daily live classes, you get to interact with the educator then and there itself, right? आपने, you know guys, there is a difference. There is a difference between YouTube का live and हमारा Unacademy का live. If I'm moving this hand right now, YouTube में आपको वो 5 seconds के बाद, 10 seconds के बाद दिखेगा. हो सकता है, देखिए, हो सकता है 10 सेकंड बाद दिखे. सेम होता है व्हेन यू पोस्ट अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स और व्हेन यू आस्क समथिंग और व्हाटएवर, या ग्रीट करते हैं, जो भी करते हैं, वो मुझे एक डिले के बाद मिलता है. बट अनअकैडमी पे इट ऑल रन्स इन रियल टाइम. सब कैसा रहता है? रियल टाइम लाइव रहता है. ठीक, सर इंटरेक्शन भी कैसा रहेगा? रियल टाइम. आपने वहां क्वेश्चन पोस्ट किया, वहां पे आपने आंसर दिया, वहां पे आपने कुछ भी किया, तुरंत ही हमें क्या दिख जाएगा? आपका रिस्पॉन्स. वही तो चाहिए रहता है हमें. देन क्या, जिसकी हम बात कर रहे थे, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स. You get what? You get live polls and leaderboards. Test series and analysis. You can attend various test series. जैसे ही क्या, जैसे ही हमारी एसेंट टेस्ट सीरीज होती है, एसेंट चैंपियनशिप, इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट सीरीज. ओके, किसके थ्रू? अनअकैडमी के थ्रू. ओके, यू कैन गिव एसेंट चैंपियनशिप वाली टेस्ट सीरीज. यू कैन एनालाइज योरसेल्फ, कहाँ पे, कौन से सब्जेक्ट में आप थोड़े वीक पढ़ रहे हो. ठीक, you can analyze yourself, you can compare yourself. If you can compare yourself, if you think आप क्या कर रहे हो, कहीं लैग कर रहे हो, ठीक है, आप जो टॉपर है उससे यू कैन कंपेयर आप कितने पीछे हो या कितने आगे हो. इफ यू आर अ टॉपर देन यू विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ अदर पीपल. एंड मुझे पता है मेरे बच्चे हमेशा टॉप 3 टॉप 5 में रहते हैं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट? चलिए, देन हमारे क्या, डाउट क्लियरिंग सेशंस, हमारे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस. ये सारे कहाँ? ये सारे प्लस में. ये सारे कहाँ हैं? ये सारे प्लस में है बेनिफिट्स. और भी थोड़े बेनिफिट्स है गाइस, जैसे कि अनलिमिटेड व्यूज. जैसे कि क्या? जैसे कि अनलिमिटेड व्यूज. आपको सारे जो लाइव लेक्चर है, जो बैकअप के फॉर्म में सेव हो जाते हैं, उन पे अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं.
Subjects and what? Subjects and educators. You get you get access to all your subjects just by taking one subscription. You get access to all your subjects and all the educators, right? ऐसा नहीं कि एक इकोनॉमिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो सिर्फ इकोनॉमिक्स, नो 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 सर, ये पूरे 12th का सब्सक्रिप्शन है. You get to learn all your subjects and from all your educators, right? Whichever suits you the best, जो एजुकेटर का टेक्निक आपको सही लगे तो उसे फॉलो करिए. एंड लास्टली क्या, जो भी हमारे क्लास नोट्स रहते हैं गाइस, आप उसे क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए, सेव कर लीजिए. अब क्या करना पड़ेगा, आपने सिंपली ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ सिंपली प्ले स्टोर या आईओ स्टोर पे जाके सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड करिए. ठीक है. सिलेक्ट प्लस, क्या सिलेक्ट करना है, प्लस सिलेक्ट करना है. देन सिलेक्ट योर गोल. हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है हमारा गोल है सीबीएसई 12. हमारा गोल क्या है गाइस, हमारा गोल है सीबीएसई 12. सिलेक्ट योर गोल and choose the subscription which you like. Now these are the subscription for those students who are in 11th. These are the subscription for those who are in 11th. All right, you can choose from a variety of terms. तो एक महीने से लेके 24 महीने तक का ऑप्शंस है for people who are in 11th, right? साथ ही साथ if you apply this code on checkout, ठीक है guys, if you are in 11th I would suggest कि आप ये नीचे तीन, फिर ये 15, 18, 24 ये वाले में से कोई एक चूज करें, राइट? ये वाले में से कोई एक चूज करें एंड अप्लाई द कोड SAJYT while you are checking out. Why? Because you get a 10% off. You get what? You get 10% off. डिस्काउंट किसे नहीं पसंद, है कि नहीं? डिस्काउंट किसे नहीं पसंद, right? These were the plus subscriptions which are available for students in 11th, right? Similarly iconic, ठीक है, आइकॉनिक के मैं बेनिफिट्स बताता हूँ, बट हमें देखने थे 12th के सब्सक्रिप्शंस, right? Particularly 12th के. If you are in 12th right now, so you have 3 variants. इधर आ जाइए, इधर आ जाइए. 3, 6, 12. Come on the right side of the slide. यहाँ पे you have 3 variants, 3, 6 and 12 marks. 3 variants guys. आपने कौन सा चूज करना है? You have to either right now current scenario के हिसाब से I'm talking right now, you have to choose either 3 months or 6 months. I would suggest 6. Why? Because अगर uncertainty है, ठीक है, क्या देखिए, अनसर्टेनिटी तो है भैया, अनसर्टेनिटी तो है. एग्जाम्स में अनसर्टेनिटी तो है, क्या होता है क्या नहीं कुछ पता नहीं, ठीक? होने तो वाली है बट कब, अभी तक कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं. सो कौन सा आई वुड सजेस्ट, गो फॉर 6 months. इट विल कवर यू, ठीक है. सारे बेनिफिट्स का आपने पूरा उपयोग करना है सर, पूरा. यू हैव टू utilize each and every resource that you have at your hand. Choose a 6 months or 3 months. I would suggest go for 6 months, right? Go for 6 months. It is worth 10k. Apply the code. You get a flat 10% off. Now this code is very important. ये कोड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. Why? Because this is going to give you discount as well as this is going to unlock some content. ठीक है, मैं वो आपको बताऊंगा क्या आगे जाके,
Okay, so choose whichever you like. All right, choose whichever you like. I suggest go for 3 or 6. Okay, apply the code SAJYT and get yourself a 10% off. ये इसके थे सब variants ये थे plus के. Similarly, iconic, iconic में, iconic में guys, iconic में benefits are so awesome. Benefits are so awesome. Iconic is based on one-to-one interaction. It is based on one. It is based on one-to-one interaction. We will be your personal coach. We will be your personal coach. You will be you will be giving mentoring on regular basis. सर आपके स्टडी प्लान्स, आपकी स्ट्रेटजीज, आपके गोल्स, एकेडमिक चीजें, नॉन एकेडमिक चीजें, सारी चीजें डिस्कस करी जाएंगी. सारी चीजें डिस्कस करी जाएगी एंड आपको प्रिपेयर किया जाएगा फॉर योर CBSE बोर्ड एग्जाम. राइट, देन एक्सक्लूसिव exclusive doubt session. Exclusive what? Exclusive doubt sessions. हर एक सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहेगा, एक्सक्लूसिव रहेगा, उसमें और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ आप रहेंगे, आप और हम. राइट, देन देयर इज समथिंग parental connect. So for this is for your benefit. आपकी मेहनत, आपकी मेहनत को क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं. एंड देन सारे प्लस के बेनिफिट्स. राइट, these are all the benefits of iconic. choose the 6 months. I would suggest 12 महीने का अभी चूज करके क्या ही कर लेंगे. राइट, 6 months सही है. It will cover the uncertainty part also. Right, choose the 6 months variant, apply the code, apply the code SAJYT, SAJYT. Apply this code and get yourself a 10% off. Right, get yourself a 10% off simply by applying this code. Now एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से टैप कर लीजिएगा. टेलीग्राम का चैनल का लिंक है फॉर डेली अपडेट्स. ऑलराइट, सारे अपडेट्स वहां पे मिलते जाएंगे आपको क्लासेस के बारे में. ऑलराइट, एंड साथ ही साथ क्या करें, इफ यू वांट सर चैनल को सब्सक्राइब करो. क्यों? बेल आइकॉन के साथ. सर घंटी बजा के जाना है. देखिए पिज्जा हट में जब हम जाते हैं, पिज्जा हट में जब जाते हैं तो क्या घंटी बजाते हैं? पिज्जा अच्छा लगा तो घंटी बजाते हैं ताकि पता चले कि हाँ सर ये आके गए हैं. इसी तरह यूट्यूब की भी घंटी होती है. यूट्यूब की भी घंटी को बजाओगे तो आपको आपको ये पता चलेगा हम कब आ रहे हैं, है कि नहीं. चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट guys. what was the halat what is the halat of our economy in post independence period 1950 से 1990 तक, क्या हालत रही है. ठीक है, एक बार क्या करते हैं, एक बार कल का रिवाइज करते हैं, एक बार कल का रिवीजन करते हैं फटाक से, मजा आ जाएगी. ठीक, कल का एक बार रिवीजन करते हैं ताकि एक लिंक बना रहे, है कि नहीं, लिंक बना रहे. सो चलिए, बहुत ही बहुत ही इजी रीडिंग है. all you have to do is sit back, relax, and just listen and try to form a story around whatever we are learning. All right, now India got independent on 15th August 1947 from the 200 years of what colonial rule, British rule. And the destiny of the Indian economy
was in the hands of the Indian leaders of that era, right? And the main problem that everyone was facing, our leaders was facing, was to decide which type of economy we should opt for, which type of economy we should opt for. Right? The leaders of independent India had to decide, among other things, the type of economic system which was most suitable for us. Right? Good morning, Lalit. Namaskar, beta. Suprabhat. Then, then, from the various types of economies जो हम आगे देखेंगे, बट हमने देखा था, कल देखा था कौन कौन सी थी, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट. मेन जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी नेहरू जी को, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी नेहरू जी को, वो कौन सी थी सर? कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट. बट उनको कौन सी ज्यादा भाई, कौन सी ज्यादा भाई? उनको भाई सोशलिज्म. ठीक है. Nehru was more inclined towards socialist economy, but he wanted a balance. Right? He wanted a balance. He wanted to create an economy which was balanced between the socialist and a capitalist economy. Right? So, among the various economic patterns, Nehru was inclined towards the socialism. Right? However, guys, एक पिक्चर क्रिएट करते जाइए साथ साथ. ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट हुए, सबसे पहले सर सेलिब्रेशन हुआ, इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सारे लीडर्स बैठे एंड दे वर डिस्कसिंग कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू टेक आवर इकोनॉमी फॉरवर्ड. राइट? अब इसमें सब डिस्कशन चल रहे थे, सर ऐसी ऐसी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी रहती है. देन नेहरू जी को कौन सी अच्छी लगती थी? द सोशलिज्म. कौन सी इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी. बट however he was not in the favor of the kind of socialism that was established from the former Soviet Union. ठीक है. बट उनको जो करंट सोशलिज्म का पैटर्न था वो नहीं जम रहा था, जहां पे everything was owned by the government, where everything was owned by the government and government only. There was no private property. उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी. so so he wanted an economy which was a hybrid, right? So it is not possible in a democracy like India for government to change the ownership pattern of land and other properties of its citizen in the way that it was done in the former Soviet Union. Right? Nehru and many leaders and thinkers, excuse me, sought an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism. The सारे लोगों ने सर डिस्कशन, जस्ट इमेजिन एवरीवन इज सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल, एवरीवन इज डिस्कसिंग. सर कोई सोशलिज्म के प्रोज बता रहा है, कोई कॉन्स बता रहा है, कोई कैपिटलिज्म के प्रोज बता रहा है, कोई कॉन्स बता रहा है. Right? But they all really wanted to create they all wanted to create a balance, and and they came up with a balance. Thinking, basically sympathizing with the socialist outlook, they found the answer in an economic system which, in their view, combined best features of socialism without its drawback. In the view, India would be a socialist society with a strong public sector but also with private property and democracy. The government would plan for the economy with the private sector being encouraged to be the part of the planned effect. So everyone came up with a solution. Everyone, every leader and every thinker of our independent India came up with a solution that let's have a mixed economy. Let, let's have a what? Let's have a what? Let's have a mixed economy. So सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों में से क्या बेस्ट, टेक द बेस्ट ऑफ द बोथ पोल्स एंड लेट्स ट्राई एंड create a new economic pattern. That is what socialism and capitalism का mixture, that is mixed economy. Okay? Mixed economy.
right? The industrial policy revolution in 1948 and the directive principles of the Indian Constitution reflected this outlook. Right? In 1950, the Planning Commission was set up with the Prime Minister. Prime Minister कौन थे वो टाइम के हमारे जवाहरलाल नेहरू as its chairperson. The era of 5-year plan had begun. Right? So, so जो भी प्लानिंग है वो किसके हाथ में दे दी गई थी? प्लानिंग दे दी गई थी गवर्नमेंट के हाथ में. एंड गवर्नमेंट वो प्लानिंग कैसे सब फाइव फाइव ईयर प्लान के हिसाब से वो प्लानिंग करना शुरू कर दिए. पंचवर्षीय योजना जिसे हम आज कहते हैं. right? तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या क्या थी? टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कौन कौन सी थी? सर सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड. right? now to decide now to decide which to choose which to choose these three questions these three questions needs to be answered. These three questions needs to be answered to know which type of economy we want. All right. सबसे पहला, what goods and services. सर कौन से goods and services produce करने हैं? What type of goods and services needs to get produced? सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रोड्यूस क्या कर रहे, प्रोड्यूस क्या करना है. दूसरा क्वेश्चन कैसे करें, हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड. Should we use more of manual labor or should we use more of the machines? Right. तीसरा क्वेश्चन, sir, after the production is done, how do we move around with the distribution? How do we move around, go about having a distribution? Right. So when you answer these three, when you answer these three, you will know which type of economy is suitable for you. Okay. You will know which type of economy is suitable for you. All right. चलिए. So one answer to these questions is dependent on the market forces of supply and demand. In market economy, also called as what? Capitalism. Only those consumer goods will be produced that are in demand. Capitalism में क्या हो रहा है? Sir, only those goods are going to get produced which are in demand. That is, goods that can be sold profitably either in domestic or in foreign markets. Right? If cars are in demand, cars will be produced. If bicycles are in demand, bicycles will be produced. If labor is cheap, if labor is cheaper than capital, if labor is cheaper than capital, we will be using what? We will be using what? We will be using labor. If if machines are more cheap, if capital is more sasta, we will use machines for the production. Right? In a capitalist society, the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need, but on the basis of purchasing power. Right? The capitalism में distribution कैसा होता है? Capitalism में, right? Capitalism में distribution कैसा होता है? On the basis of what? Purchasing power. Why? Because यहाँ पे क्या market forces के ऊपर छोड़ दिया है. Okay? So the distribution is also dependent on what? The distribution is dependent on the market forces, that is demand. Okay? अब purchasing power क्या सर? पैसा होना जरूरी है, जेब में पैसा होना जरूरी था. So low cost housing for poor is much needed, but will not count as demand the market tends because the poor do not have the purchasing power to buy the demand. As a result, this commodity will not be produced and supplied as per market forces. Right? Even though देखिए कैपिटलिज्म में एक चीज हो रही है कि जो जरूरत है
वो चीज प्रोड्यूस नहीं होगी। प्रोड्यूस क्या होगी? जिसकी डिमांड है और जिसके लिए लोग पैसा भर सकते हैं। ठीक है? Such a society did not appeal to Nehru, our first prime minister, for it meant that great majority of people of the country would be left behind without a chance to improve their life. Okay? Without a chance of improving what? The quality of life. Alright? A socialist economy answers the three questions in totally different manner. Socialist economy जो थी, so that answered the questions in totally different manner. सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसमें कौन सा गवर्नमेंट सारी चीजें डिसाइड कर रही है. It assumes that the government knows what is good. All right, it knows what is good for the people, and so it can produce those specific goods and distribute. ठीक है. अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है? Distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not what they can afford. Distribution कैसा होगा? On the need of the people, not on the purchasing power. Unlike under capitalism, for example, a socialist nation provides free health care to all citizens. Strictly, a socialist society has no private property since everything is owned by the state. China is the best example of what socialist economy. चलिए, but हमें क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए था एक मिक्स. हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था एक मिक्स जो भैया दोनों का बेस्ट ले. Because we wanted कि सर कुछ हिस्सा गवर्नमेंट हैंडल करे एंड कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर. राइट. जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जो प्लानिंग हो गई, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो सब किसके हाथ में दे दी? गवर्नमेंट के हाथ में दे दी. एंड बाकी वर्किंग किसके हाथ में दे दी? वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में. सो दिस इज व्हाट दैट दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. राइट. देन प्लान के बारे में बात हुई थी. सर व्हाट इज अ प्लान? जल्दी से शॉर्ट में एक ही लाइन में देख के खत्म कर देंगे. अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज. A plan spells out how the resources of nation be put to use. It should have some general goals as well as specific objectives that are to be achieved within a specified period of time. And ये हमारे लिए कितना है? 5 years. इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 5 year plan बोलते हैं. Right? Now, 5 year plan. 5 year plan is a basis of a more broader plan जिसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान. उसका टेन्योर कितना रहता है? 20 years. राइट. चलिए, ये क्या था? ये था एक बहुत ही ब्रीफ, ये था बहुत ही ब्रीफ रिविजन कल के लेक्चर का. ठीक है. नाउ दैट वी नो हम कहाँ है, कहाँ छोड़े थे, कहाँ से शुरुआत की थी. राइट. नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टुडेज टॉपिक. राइट. हमें समझ गया अभी. हमें समझ गया सर. थोड़ा रिवीजन भी देख लिया हमने कल का. ठीक है. नाउ अब आ जाते हैं. सर द गोल ऑफ a 5 year plan. What are the goals of 5 year plan? Right. Sorry. A plan should have some clearly specified goals. The goals of 5 year plans were growth, modernization, self-reliance, and equity. तो 5 year plan के गोल क्या है? तो कुछ स्पेसिफिक गोल्स रहने चाहिए. देखिए, if you are planning out for the entire economy, you have to have some specified goals. ठीक है. सब ऐसा हवा में बातें नहीं हो सकती है. You have to have some specific goals. Right? You have to have some specific goals.
Just a second, I'll plug in the charger. Are we charging? दिन शुरू हो गई है क्या? Just a second. हाँ जी, चार्जिंग तो हो गई. Yes. Guys, AV बराबर है ना? AV बराबर है. चलो एक बार बता दे AV बराबर है क्या? लैग वैग तो नहीं आ रहा है? AV बराबर है. चलो ठीक. So हमारे प्लान में because we are now an independent democratic economy and we are following what? We are following a mixed economy. We are following what? We are following a mixed economy. So we need some goals. We need a plan, and for that plan, we need some goals. Right? Just a second. Just a second. थोड़ा सा. This was bugging me a lot. थोड़ा सा OCD है. Things need to be perfect. चीजें perfect रहनी चाहिए. हाँ, अभी कितना अच्छा लग रहा है. अभी कितना अच्छा लग रहा है. सब एक लाइन में है. वाह वाह वाह. तो देख के ही मजा आ रही है. ठीक है. So we need a goal, and for that goal we need some specific. We need a plan, and for that plan we need some specific goals. And वो कौन से goals थे? Growth, modernization, self-reliance, and equity. GMSE. ठीक है. इसको इसको रीअरेंज करके क्या लिखेंगे? जेम्स. क्या है हमारे स्पेसिफिक गोल्स? क्या है? जेम्स. GMSE को GEMS कर दिया. ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस. GEMS. जेम्स. ये क्या है? ये है हमारे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान. ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी एग्जाम में. लिख लीजिए फटफट. फटफट लिख लीजिए ये चीज. सर क्या है? व्हाट आर द गोल्स ऑफ अ 5 ईयर प्लान? जेम्स. जेम्स किसे याद नहीं? जेम्स मुझे बहुत पसंद है. टेक अ पंच इन योर हैंड एंड कीप पॉपिंग. राइट. सो चलिए. These were the specified goals, but this does not mean that all plans have given equal importance to these goals. ठीक. बट ऐसा नहीं कि सारे सारे प्लान्स ने इन सभी goals को equal importance दिया है. Due to limited resources, a choice has to be made in each plan about which of the goal is to be given primary importance. Now, in each and every 5 year plan, each and every 5 year plan, as we have limited resources, as we have what? We have limited resources. Not not the same level of importance can be given. Not the same level of importance can be given to each and every specific goal. Right? Nevertheless, the planners have to ensure that as far as possible, the policies of the plan do not contradict these 4 goals. Let us now learn about the goals of planning in detail. Now let's look at these 4 goals. आज का बस यही मकसद है. आज यही तो ये 4 goals को ही देखना है. ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. चलिए.
हाँ, सबसे पहला ग्रोथ। फिर इसे रंगीन बना दीजिए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है ग्रोथ। देखिए कहाँ से शुरुआत करी थी। स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी सर? स्टोरी की शुरुआत हुई थी सर, अभी सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट हो गए, अब सब टेबल पे बैठे हैं, टेबल पे बैठ के सोच रहे हैं कि भैया या किस टाइप की इकोनॉमी फॉलो करना चाहिए। फिर डिसाइड किया कि ओके ऐसा करना चाहिए। फिर प्लान की बात करी। प्लान, हमें एक प्लान करना पड़ेगा। प्लान किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। ठीक है, प्लानिंग करना किसका काम रहेगा? गवर्नमेंट का काम रहेगा। तो अब वो प्लान कैसा होना चाहिए, अब उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अब प्लान में हमने क्या बोला? प्लान में क्या रहना चाहिए? तो प्लान में कुछ स्पेसिफिक गोल्स रहने चाहिए। राइट। ये ये क्या है? ये हमारी स्टोरी लाइन है अभी तक। ये हमारी स्टोरी लाइन है अभी। राइट। चलिए, तो क्या सबसे पहला स्पेसिफिक गोल हमारा ग्रोथ। सबसे पहला क्या? जेम्स में से सबसे पहले देख रहे हैं जी। नाउ it refers to increase in countries capacity to produce the output of goods and services within the country. It, it implies either a larger stock of productive capital or a larger stock of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services. Growth, growth का मतलब क्या है? What is growth? Growth का मतलब simply, so when there is an increase in the capacity, when there is what? When there is increase in the capacity in the output of goods and services which is produced within a country. जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की, तो क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रोथ। A good indicator of economic growth. A good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the GDP. ये चीज हमने मैक्रो में देखी। Okay, when your GDP rises at constant prices, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं? देन वी से दैट आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। है कि नहीं गाइस? सारी चीजें पता है, सारी चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड है। दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड रहती है एंड बहुत ही रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हो आप। राइट। इसीलिए इसमें बहुत कम सर आपको रटने की जरूरत पड़ती है। मोस्टली मोस्टली आपको जब समझ जाता है, लॉजिक समझ जाते हैं, तो आप क्या कर लेते हो सर? यू कैन जॉट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। है कि नहीं? सो सर, अ गुड इंडिकेटर क्या है? जीडीपी। ऑलराइट। The GDP is the market value of all the goods and services produced in the country during a year. ये हमें पता है। GDP क्या? It is the aggregate value of goods and services produced during a financial year. You can think of GDP as a cake, and growth is increase in the size of the cake. If cake is larger, more people can enjoy it. It is necessary to produce more goods and services if people of India are to enjoy. Okay? तो इसमें क्या एक मेटाफोरिकली हमें समझाने की कोशिश करिए दैट व्हाई जीडीपी इज इम्पोर्टेंट। जीडीपी में ग्रोथ क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज द मोर द बेटर, द मोर द बेटर। केक के एग्जाम्पल में दिया है, इफ केक इज व्हाट, केक इज द जीडीपी, जीडीपी बढ़ेगा तो
ज्यादा लोगों को केक खाने मिलेगा, सिंपल. The GDP of a country is derived from the different sectors of economy, namely the agriculture sector, the industrial sector, and the service sector. The contribution made by each of these sectors make up the structural composition of economy. In some countries, growth in agriculture contributes more to the growth of GDP, while in some countries, the growth in the service sector contributes more to the growth of the GDP. So, GDP कौन कौन सी, सर हमने क्या बोला था, जीडीपी का मतलब ही क्या था, हमने जब मैक्रो में भी पढ़े थे, इट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जीडीपी क्या है? Aggregate value of goods and services produced in an economy during a financial year, right? अब sir, aggregate value of goods and services produced in an economy during a financial year. Goods and services produce, sir, there are various n number of goods and services that can be produced. उन्हें किस में मेजरली किस में बांटा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, राइट. सो एक इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ ये तीनों सेक्टर के ग्रोथ से देखी जा सकती है, राइट. सो इकोनॉमी में ग्रोथ ग्रोथ बहुत जरूरी है. हमारा सबसे पहला स्पेसिफिक गोल क्या है? ग्रोथ. ग्रोथ होनी चाहिए. 5 ईयर प्लान का सबसे पहला गोल क्या है? सिर्फ ग्रोथ. एंड ग्रोथ काय में देखेंगे? जीडीपी में, राइट. देन जी हो गया. अब क्या देख रहे हैं? एम. अब क्या देखना है? मॉडर्नाइजेशन. क्या है? मॉडर्नाइजेशन. दूसरा गोल दूसरा गोल हमारा क्या रहना चाहिए? To increase the production of goods and services, the producers have to adopt to new technologies. For example, a farmer can increase the output of the farm by using new seeds varieties instead of the old one. Similarly, a factory can increase output by using a new type of machine. Adoption of new technology is called modernization. Okay? So modernization किसे कहेंगे? नए नए तरीके to to adapt to new technologies, to new procedures, to do the same work. ठीक है. अब देखिए देखिए ऐसी चीजें करना जिससे क्या हो रही है? एफिशिएंसी बढ़ रही है हमारी. आउटपुट बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है. नाउ नाउ सर हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं. ऑनलाइन लर्निंग. हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं गाइस. ऑनलाइन लर्निंग. नाउ it has become learning has become more efficient and more appealing now. Why? Because अब देखिए थोड़ा विजुअली भी हमें थोड़ा अच्छा लगता है, राइट. अब पीपीटी के थ्रू पढ़ते हैं. पहले तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे सर, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया चलती थी हमारी. ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया रहती थी, या ज्यादा से ज्यादा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे. और व्हाइट बोर्ड की दुनिया कैसी रहती है सर? ब्लू और व्हाइट सिर्फ. बिल्कुल मजा नहीं आती थी. बट अभी वी हैव we have access to technology and we are moving forward. ठीक है. हम हमारा क्या बढ़ा रहे हैं? हम हमारी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन.
That is modernization, right? Adaption of new technology is called adaptation. Correct? बहुत बड़ी. However, modernization does not refer only to use of new technology but also to changes in social outlook, such as recognition that women should have the same right as men. Right? तो सिर्फ नए टेक्नोलॉजी को यूज करना मॉडर्नाइजेशन नहीं कहा जाएगा. तो सोशल आउटलुक जैसे जैसे कि क्या, recognize that women also have the equal rights and they have. We are in a modern world, right? सर वो जमाना गया, आई डोंट नो कहाँ से आया था वो चीज, राइट? बहुत ही बेतुका बेतुका था कि वुमेन कैन नॉट वर्क, ये नहीं वो नहीं, ठीक. दैट इज वेरी बैकवर्ड थिंकिंग. बहुत ही पुरानी सोच है वो. सबके पास इक्वल राइट्स है तो बहुत ही पुरानी सोच थी, पता नहीं किसने लाई थी. वी आर नॉट दैट. Modernization also means what? Giving an equal right to everyone, be it men, be it women. Right? In traditional society, women are supposed to remain at home while men work. A modern society makes use of the talents of women in the workplace. Okay? Such a society, okay, in most occasion is prosperous. Obviously, it is going to be prosperous when you give equal rights to everyone. ठीक है, ये differentiation किसने लाया था? I don't know. And that was a very horrific differentiation. That women should stay at home and men should work. No, everyone is equal. Everyone should get an equal chance and equal opportunity to work, right? Then जेम्स में से जी और एम देख लिया. जेम्स में से दो गोल देख लिए. सर एक तो ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमी की क्या ग्रोथ होना चाहिए, फिर क्या मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए. ऑलराइट. अब सेल्फ रिलायंस. अब क्या है? अब है सेल्फ रिलायंस. और थर्ड गोल क्या है हमारा? सेल्फ रिलायंस. A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. Right? The first 7 5-year plan gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. एक बहुत ही शानदार तरीके में अगर मैं इसे बताऊं, मोदी जी के तरीके में, तो आत्मनिर्भर भारत. तो सेल्फ रिलायंस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? देखिए ये चीज मोदी जी ने आज बोली है, बट ये चीज कब से बोली गई थी? सर ड्यूरिंग 1950s. तो जब इंडिपेंडेंट हुए थे तब से ये विजन चली आ रही है. दैट क्या बनना है? सेल्फ रिलायंस पे वर्क करना है, आत्मनिर्भर बनना है. ठीक है. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. It is understandable that people who were recently freed from foreign dominations should give importance to self reliance. Further, it was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology, capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policy. Right? It was very important for us during the independent period. Okay, post independence, it was very important कि हम खुद पे ध्यान दें, खुद प्रोड्यूस करें, खुद टेक्नोलॉजीज डेवलप करें, खुद कैपिटल पैसा खुद लगाए in production of goods and services. Why? Because we don't want to get dependent on others. आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी था. Why? Because तभी हम ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं. तभी हम क्या ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं.
because अगर we get dependent on the foreign countries, so उनका इंटरफियरेंस हमारी पॉलिसी में बढ़ जाएगा, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में बढ़ जाएगा, फिर उनके हिसाब से हमें चीजें करनी पड़ेगी। एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, लेमैन एग्जांपल, राइट। सपोज सपोज आपका एक बिजनेस है एंड आप खुद पैसा लगाने के बदले, ठीक है, किसी इन्वेस्टर को लेके आ रहे हो, वो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, ठीक है, यू आर नॉट सेल्फ लैंड, यू आर डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स, अ फॉरेन पार्टी। सो जब इन्वेस्टर ने पैसा लगाया आपके बिजनेस में, सो डोंट यू एग्री दैट आपको वो इन्वेस्टर के हिसाब से फिर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। वो आपको क्या बीच बीच में टोकेगा, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये पॉलिसी नहीं ऐसा करो, है कि नहीं? तो सेम चीज इज applicable on a bigger, larger economic level. That's why self-reliance was majorly promoted. It was very much important that India became what? Atmanirbhar. India became what? Atmanirbhar. Now, जेम्स में से सर सिर्फ बचा है अब ई, दैट इज व्हाट? इक्विटी। सो ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया, अब सिर्फ बचा है ई, दैट इज व्हाट? दैट इज इक्विटी। दैट इज व्हाट? इक्विटी। नाउ equity. Now, growth, modernization, and self reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. A country can have high growth, the most modern technologies, okay, which is developed by themselves, okay, and also have most of its people living in poverty. So we can have all this, but still we can have most of our population living in poverty. Why? Because there is no equality. Okay? It is important to ensure that the benefit of economic prosperity reaches the poor section as well as the rich. ठीक है, सर इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों सर, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, ये तीनों काम के नहीं रहेंगे if there is no equality, if the benefit of all these doesn't reaches each and every person too, from the poor to the richest, from the poorer to the richest, ठीक है, जब तक ये सभी को नहीं मिलेगा सर, हम आगे नहीं बढ़ पाए। So in addition to growth, modernization and self-reliance, equity, that is equality, is also very important. Each Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, decent house, education, healthcare, and inequality in distribution of wealth. Right? So every citizen should have an equal right, should have the basic necessities: food, clothing, shelter, and education. Right? ये क्या है सर? ये हमारे स्पेसिफिक गोल्स है, ये हमारे गोल्स है इसके 5 ईयर प्लान के, कि भैया ये सारी चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, राइट? ये सारी चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। Alright, let us now see how the first 7 5-year plan, covering the period of 1950 to 1990, attempted to attain these 4 goals and the extent to which they succeeded in doing so, with reference to agriculture, industry, and trade. ठीक है?
एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग सर, यहां तक, इसके आगे का ये कल करेंगे, ये कल करते हैं। ऑलराइट, इसके आगे का कल करते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि हम इंडिपेंडेंट हुए, इकोनॉमी सिलेक्ट करी, कौन सी टाइप की इकोनॉमी फॉलो करना है, फिर हमने हमारे 5 ईयर प्लान के गोल्स सेट कर दिए, ठीक है। अब गोल सेट करने के बाद, गोल सेट करने के बाद सर कैसे, कैसे हमने ऐसे पहले 5 ईयर प्लान में अचीव करने की कोशिश करी, ठीक है। फिर कौन कौन से सेक्टर्स देखेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेक्टर। ऑलराइट, चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। ऑलराइट, जाने से पहले if you are going to attend a special class, just remember, use this code, use this code। ये क्या है सर? ये हमारा क्लास कोड है। व्हाई? ये आपको हेल्प करेगा टू अनलॉक द फ्री कंटेंट, ये आपको हेल्प करेगा टू अनलॉक द फ्री कंटेंट। आपको कहीं भी अगर पूछता है, कोई भी क्लास में अगर पूछता है कि पुट इन अ कोड जिससे क्या आपका फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाए, आपने सिर्फ टाइप करना है SAJYT, SAJYT टाइप करना है, आपका फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज सर ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें क्या मिल रहा था, इसी से हमें एक्सेस मिल रहा है अभी फ्री कंटेंट को, और साथ ही साथ क्या मिल रहा है, साथ ही साथ डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। दिस सेम कोड कैन बी यूज्ड, दिस सेम कोड कैन बी यूज्ड, the same code can be used for attending the quiz. Right, the same code can be used to attend the quiz. Chali, thank you so much, guys. Thank you so much for tuning in. I hope you have a great day. Do subscribe to the channel. Okay, hit the bell icon so you get notified every time we come live. Right, Chali. Thank you so much, guys. And if you are going to get a subscription, don't forget to use our code SAJYT for your 10% discount. मैं क्यों इतना बोलता हूँ सर? डिस्काउंट है तो ले जाइए, है तो ले जाइए, है कि नहीं? है तो ले जाइए सर। चलिए, थैंक यू सो मच, विल कैच अप सून टुमारो सेम टाइम 9 AM। हमारी स्पेशल क्लास कितने बजे होती है? हमारी स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास कितने बजे होती है गाइस? 7:30 बजे, डेली लाइव, राइट। डेली लाइव आते हैं हम कितने बजे? 7:30 बजे शाम को। कहाँ पे? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। कहाँ थे? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ऑलराइट, हम आपसे कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस, आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।